Okay, students, in our last class we have learned to construct the triangle with given base angle and sum of its two sides. Now today we will learn our second construction, and that construction is to construct a triangle of given base angle and difference of two sides. Last class में हमने सम ऑफ टू साइड्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया था, अब हम डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो इफ वी हैव टू मेक ए ट्रायंगल ABC, देन गिवन क्या क्या मिलेगा आपको? द गिवन इंफॉर्मेशंस आर BC इज इक्वल टू समथिंग, ये सेंटीमीटर, एंगल B और एंगल C, वो दोनों में से कोई एक मिल जाएगा. सो एनी वन ऑफ द एंगल B and C इज गिवन, एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दैट इज AB minus BC is given. These three informations have been given in your question, and you have to construct a triangle using these informations. So let us draw the triangle using different steps. Steps आप लोग बुक से लिख सकते हैं, यहाँ steps लिखता नहीं हूँ मैं. I am just make you understand how to construct the triangle. You can use the language from the book. So our first step is, suppose we have given that BC कुछ length दी है. Let us assume that this is 7, this is 60 degree, this difference is 3 centimeter. This difference is 3 centimeter. Now first we will draw the baseline, and baseline is given BC is 7 centimeter. So draw a baseline BC. Draw a baseline BC and construct a base angle at the point B, taking BC as base. So draw here using this compass. How to draw the 60 degree angle? Draw an arc, again put here, draw another arc. When both the arcs intersect each other, then join this intersection point to the line of this. You have learned it how to make the 60 degree angle. So in that manner you will draw. Be careful, use only compass, not protractor. Use compass to draw the lines. उन सारे एंगल्स के लिए जिनको आप कंपास से बना सकते हो, उनके लिए आप हमेशा कंपास ही यूज करेंगे. हाँ, 35 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, then you can use protractor. Otherwise you will use compass or 30 degree, 60 degree, 120 degree, 90 degree, 25 degree for all these angles. Now the first step is to draw the baseline BC, then make the base angle at the point B, that is 60 degree. Now cut a line segment equal to the difference of the two sides from BX, this line. From this line BX, cut the line segment, and that line segment must be equal to the difference of two sides. So here 3 sides, 3 centimeter. So let us take distance in the compass 3 centimeter and draw an arc here. ये है. Now suppose this point is point. Join this point D to C. Join this point D to C. अब जब हमने इस D को C से join कर दिया, then the next process is to draw the perpendicular bisector. To draw the perpendicular bisector of DC. So let us draw the perpendicular bisector. इन प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं. एक दिन मैंने आपको फर्स्ट डे इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस भी किया था. So let us draw. Take more than half of the distance of the line segment BC. Then this.
arcs cut each other at point P and Q. Join this P and Q. Join this P and Q and extend this PQ until it cut the line BX at any point, and that point is A. That point is A. Now join A to C. Join A to C. This is your required triangle ABC. Now let us summarize. First, draw the baseline BC of given length. So first draw the baseline, then make an angle 60 degree at the point B, taking BC as center. तो एक 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया और इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये लाइन BX ली, B एंगल XBC. Now cut a line segment from BX equal to the length of the difference of the given two sides. दो साइड्स के डिफरेंस के इक्वल की लेंथ हमने BX से कट करी और वो पॉइंट आता है D. BD is the difference of the BD is the line which we have cut from the BX, and this BD, length of this BD is equal to the length of this difference. Now join this D to the point C. Again draw the perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector आप ड्रॉ करना सीख लिए हैं, तो draw the perpendicular bisector of BC. Join the intersection points PQ and extend this PQ until it cut the line BX at the point A, and join this point A to C. Join this point A to C, and this is the required triangle ABC. Now one thing that we have to make sure here, this line BD is the difference AB minus AC. How we will prove it? Let there is a line. Suppose this line is any line AB. Now if we draw the perpendicular bisector of this line in this manner, and if you take any point on this perpendicular bisector anywhere, then that point must be equidistant from the ends of this line segment. थोड़ा सा reconstruct करें. क्या होगा? If you have a line segment and you have drawn a perpendicular bisector, इसका perpendicular bisector आपने ड्रा कर लिया. Now if you take any point anywhere on this perpendicular bisector, that point must be at equal distance from both lands. अगर आपने यहाँ एक पॉइंट लिया तो ये PA और PB इक्वल होंगे. यहाँ अगर कोई पॉइंट लिया तो this length must be equal to this length. यहाँ कोई पॉइंट लिया तो this length must be equal to this length. तो अब बताओ, अगर इस BC को हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम कोई एक पॉइंट लेंगे. तो हमने यहाँ A पे ले लिया एक पॉइंट, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी या नहीं होगी, यानी AD मस्ट बी इक्वल टू AC. और हमारे पास क्या है? BD इक्वल टू AB माइनस AC. BD इक्वल टू, अगर यहां से देखो तो BD क्या होगा? BD इक्वल टू AD और AB माइनस AD. This BD is equal to AB minus AD. AB minus AD, but AD equal to AC. AD equal to AC, so we can put replace this AD by BC. AB minus AC. Then BD किसके इक्वल आया? BD आ गया ना AB minus AC के इक्वल. ठीक है, दिस इज द, ये इससे आप इसको आपकी जरूरत नहीं है, बट इसके लिए फिर भी ये समझने के लिए हमने बता दिया कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन होता है. आपको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना सीखना है, तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. थैंक यू.